Hello students, we are finally moving to the last theory topic of this chapter, which is rotational dynamics. The last topic is to find out the kinetic energy in case of a rolling motion. Okay, so kinetic energy का formula ये आएगा. Now what is rolling motion? Try to understand. यहाँ पर एक surface है and here we have one object which can roll like a sphere. ओके एंड ये जो ऑब्जेक्ट है जब रोल होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आगे मूव होगा सो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी तो होने ही वाला है ओके एंड सिंस आगे मूव होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर होगा एज वेल एज वो रोल भी होगा ओके सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसीडर होगा सो इन दिस केस kinetic energy total will be actually kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. I hope you understood. There are two parts. Okay, so I am removing this T because दो जगह T आ जाएगा. Anyways, kinetic energy translational का formula obviously बचपन से पढ़ रहे हो half mv square. Kinetic energy rotational यही चैप्टर में सीखा है. m की जगह I, v की जगह ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हमको k इंट्रोड्यूस करने का k स्क्वायर तो डेफिनेटली आप समझ जाओ मुझे i के बदले mk स्क्वायर डालना पड़ेगा रेडियस ऑफ गायरेशन सो आई विल राइट बट I is nothing but equal to mk square plus there is one more formula v is equal to r omega. Okay, so therefore omega के बदले हम लिख सकते हैं v upon r. I capital R introduce करने तो I think I should write capital R over here. But this so ये अभी इसमें substitute कर दो. So therefore half m v square plus half m k square small m mass will not change यहाँ small m है तो इधर भी small m ही आना चाहिए. Okay, then omega के बदले v upon r and square term है so square कर दिया. Now observe these two terms plus sign है बीच में कुछ तो कॉमन निकल ही रहा है half कॉमन m कॉमन v square कॉमन तो यहाँ पर क्या बच गया है ना देख 1 ओके ये सब तो कॉमन ही आ गए 1 प्लस इधर k square बच गया and इधर r square बच गया. So this is how you can see the kinetic energy for rolling motion. We get formula as this. Okay. Now let's move on to the second part. Second part में हमको क्या करना है हमको velocity का formula find करना है जो कि लास्ट में ये आएगा. Okay. अभी डायग्राम को समझो एक स्फीयर है कुछ हाइट पे है ओके एंड वहां से वो रोल करके नीचे गिरने वाला है ओके एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बट दिस नाउ द क्वेश्चन अराइजेस जब ये नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली रोलिंग मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ट्रांसलेशनल कंसीडर करना चाहिए या दोनों कंसीडर करना चाहिए ऑब्वियसली दोनों ही करना पड़ेगा इसलिए तो हमने पहले ये सीखा हुआ है बट दिस सो नाउ जब वो हाइट पे है अगर मैं आपको पूछूं कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया है उसमें so your answer will be definitely which energy potential energy height पे है तो potential energy then जैसे जैसे motion में आएगा नीचे okay वही potential energy convert किस में होता है it is getting converted into kinetic energy ठीक है that we know one form is getting converted into another okay so potential energy का formula क्या लिखोगे बचपन से पढ़ते आ रहे हो mgh काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लिखोगे ये वाला रोलिंग हो रहा है सो आई विल राइट हाफ m v square 1 plus k square divided by r square if you observe m will get cancelled ठीक है ये 2 टर्म उधर जाएगा सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 2gh is equal to v square 1 plus k square divided by r square ये मल्टीप्लाई का टर्म है इधर आके डिवाइड हो जाएगा सो दैट इज हाउ आई विल गेट 2gh divided by 1 plus k square upon r square and यहाँ पर सिर्फ v square बच गया. Okay, now only part left is to take square root. So therefore square root लेने के बाद v is equal to ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा 2gh 1 plus k square divided by r square. I hope ये दोनों मैच हो गया. So this is how the velocity
derivation is also found out. So students, we are going to derive the formula for acceleration also in this case. ये last answer आएगा g sin theta divided by 1 plus k square by r square. So how we are going to solve that? We are going to use a kinematical equation which is v square is equal to u square plus 2as. ये तो आपको पता ही होगा. Okay. Now in this, what I will do, v square minus u square is equal to 2as. यहाँ तक पहुंच गए. Now try to understand कि u का वैल्यू तो जीरो रहने वाला है. Okay, because इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा. जब स्टार्ट होगा मोशन तब जीरो ही रहेगा. v स्क्वायर का वेलोसिटी हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे दिस टर्म. ओके, देन एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है. अब s का कुछ ढूंढना है. ओके, सो फॉर s ऑब्जर्व दिस राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है. ओके, दिस इज योर हाइपोटेनस s. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर sin थीटा अप्लाई कर देता हूँ. So sin theta is equal to opposite, which is h, and hypotenuse, which is s. So from this, what I can write, therefore s will be equal to h divided by sin theta. तो ये मुझे s का भी substitution मिल गया. So let's substitute this. Therefore v square का value यहाँ से उठा लो, which is 2gh divided by 1 plus k square by r square minus u is 0 is equal to 2 into a और s का value h divided by sin theta. So your observation will be, देखो 2 cancel हो गया, h भी cancel हो गया, and ये sin theta इधर आएगा. So therefore g sin theta divided by 1 plus k square by r square, and here we have acceleration. I hope ये match हो गया. Okay, so that is how velocity and acceleration, both the formulas are derived in this case. So students, हमको radius of gyration भी find करना है for various objects like ring, disc, okay, and so on. So how to find radius of gyration value? Okay, we know that I is nothing but equal to mk square. ये तो फॉर्मूला आपको पता है. समझ लो रिंग के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, I is equal to, अब ये अबाउट सेंटर कंसीडर होगा, IC अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो उधर रिंग के लिए फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर. ओके, सो ये LHS सेम है तो RHS भी सेम हो गया. सो देयरफॉर I can write mk square is equal to mr square. m got cancel, स्क्वायर रूट लोगे तो k का वैल्यू इक्वल टू r है. सो ये हुआ रिंग के केस में. सिमिलरली चलो डिस्क के लिए सॉल्व करते हैं. डिस्क में क्या है, I का फॉर्मूला अबाउट सेंटर, इट इज हाफ mr स्क्वायर. ओके, इसको इक्वेट कर दो. सो देयरफॉर mk स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर. अगेन m गॉट कैंसल, स्क्वायर रूट लोगे सो k का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 1/2 into r, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r divided by root 2. Okay, so this way you can derive k value for sphere also. Okay, अब हमको और एक चीज करना है, हमको velocity and acceleration for all these objects find करना है. Acceleration for ring, acceleration for disc, acceleration for sphere. Similarly velocity for ring, velocity for sphere, and velocity for disc. ये find करना है. So how we are going to do that? Obviously यही सब सब्स्टिट्यूट करो, k के बदले सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है. सो व्हाट वी कैन डू इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लो. ओके, सो हियर यू कैन ऑब्जर्व इफ यू हैड डन k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ओवर हियर, सो क्या आंसर आता था, यू वुड हैव गॉट 1. इधर अगर आपने k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फाइंड आउट किया होता, you would have got half. एक स्फीयर का भी सॉल्व कर लेते हैं. इन केस ऑफ स्फीयर I का फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर. इन दोनों को इक्वेट कर दो. सो दैट इज हाउ 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर. m गॉट कैंसल. ओके, सो इधर भी अगर आप k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करोगे सो यू विल गेट एज 2/5. सो अब इसमें से शॉर्टकट क्या मिला, शॉर्टकट इज वेरी सिंपल. यहाँ पर जो भी नंबर है mr स्क्वायर के आगे
whatever numerical value you have, that comes as an answer for k square by r square. आई होप आपको समझा. रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर जो नंबर है वो आएगा. ओके, इधर क्या नंबर था, mr स्क्वायर से पहले हाफ, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर डिस्क के लिए हाफ आएगा. सिमिलरली k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर स्फीयर क्या आना चाहिए, 2/5. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. So this is the shortcut to find the value of k square by r square in case of various objects. अब k square by r square मिल गया तो इन सब में सब्स्टिट्यूट कर देते and acceleration, velocity हम लोग ये तीनों objects के लिए find कर सकते हैं. So that will be our next part. So let's proceed to find velocity for ring. क्या है formula, root 2gh divided by 1 plus k square by r square का value 1 है, so I'll write 1. So I get root 2gh divided by 2. We got this 2 as cancelled part. So that is how we get velocity for ring as root gh. Let's find acceleration for ring. So ये g sin theta divided by 1 plus, again इधर 1 value आएगा. So that is how I will get g sin theta divided by 2. That is the value for acceleration of ring. चलो डिस्क के लिए सॉल्व करते हैं. वेलोसिटी फॉर डिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस इज हाउ आई विल गेट 2gh डिवाइडेड बाय, इसका आंसर 3/2 हो जाएगा. तो ये डेफिनेटली हो जाएगा लास्ट आंसर एज 4gh डिवाइडेड बाय 3. ओके, acceleration डिस्क के लिए फाइंड कर देते हैं, which is g sin theta 1 plus, again you will substitute half, so ये 3/2 हो जाएगा फिर से, and that is how you will get final answer as 2/3 g sin theta. One last case, in case of sphere, let's solve velocity and acceleration. So velocity for sphere will be root 2gh 1 plus, इसके बदले 2/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आएगा 7/5, and that is how you will get as 10gh divided by 7. Acceleration for sphere g sin theta 1 plus, again 2/5, so g sin theta 7/5, and your final answer will come as 5g sin theta divided by 7. So this is how you can find the velocity as well as acceleration for ring, disc and sphere. Thank you.